IPMAT aspirants, welcome to Supergrads, and it's time. It's time to learn the A to Z of English with ABC 𝐈𝐏𝐻 चौहान, your English faculty. और बच्चों, कल का वीडियो आपने देखा होगा, trickiest questions on grammar. Now, what is today's session all about? It is about trickiest questions on para completion. Yes, questions देखकर आपको लगेगा कि ठीक है सर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, हमने आंसर्स देख लिए हैं, वी नो. बट नहीं, आपको ये समझने जाना है स्टूडेंट्स कि अगर एग्जाम सिनेरियो में मैं वहां पर होता, मैं आपकी जगह होता, हाउ एम आई गोइंग टू एलिमिनेट दी ऑप्शंस, हाउ एम आई गोइंग टू चूज कि ये ऑप्शन हो सकता है, ये ऑप्शन प्रोबेबल है, ये बिल्कुल ही आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है. So to equip you all with all these tips and tricks, I'm back again with this video. और आज के सेशन में स्टूडेंट्स हम बात करने वाले हैं, as I said, about para completion. So without wasting any time, without any further ado, let's start our first question, which is from IPMAT 2022. आप लोगों ने कल के सेशन को भी देखा होगा. I know आपको ग्रामर का सेशन भी अच्छा लगा था. Here I am with para completion. और एक सेशन पैरा जंबल्स का भी कल हम आएंगे सेम टाइम पर. सो इफ आई एम टू रीड दिस क्वेश्चन विदाउट एनी फर्दर डिले, क्वेश्चन रीड करेंगे जब भी जो भी आपका पार्ट है विच इज टू बी कंप्लीटेड, विच इज टू बी फिल्ड, उसके आगे पीछे की कहानी हमको पता होनी चाहिए. नाउ व्हाट इज दिस आगे पीछे की कहानी? इस पर आते हैं, जरा इस पर आते हैं, समझना. दिस विंटर आई विश टू गो टू द बीचेस फॉर अ हॉलीडे. I think I'll go to Goa, India's most well-known beach holiday destination. ठीक है. It is about 600 kilometers from Mumbai, so reaching there is not a major problem. अब मैं यहाँ पर अगर pause करूँ, समझना बात को. और इसके बाद, what is the information that we have in our hand? The major Goan beaches are tourist attractions and have some good beach view hotels and plenty of shops selling touristy things. What are these touristy things? मतलब जो tourists get fascinated by seeing those things. That is what touristy things are, such as beach robes, hats, jewelry bags and more. ठीक है, मैंने इतना रीड किया. मैं ऑप्शंस पर बाद में आऊंगा. So what is the author all about? First of all, he's wishing कि यार I wish कि इस बार मुझे कहीं जाना है बीच हॉलीडे पे. Then he transforms his wish to thinking कि ठीक है, I think I should go to Goa. फिर गोवा के लिए वो देख रहा है कि यार हाँ, पास में है, मुंबई से जा सकते हैं, ये सारी बातें लिखी हुई that it is 600 kilometers from Goa, so reaching there is not a major problem. एक चीज मिस नहीं हो रही है क्या यहाँ पे? उसने ये तो सोच लिया कि कैसे पहुंचना है, मतलब इतने किलोमीटर्स है, बट वो जाएगा कैसे? ट्रेन, फ्लाइट, बस? डोंट यू थिंक दैट इज द पार्ट which is missing here? क्योंकि यहाँ पे तो फिर वो डायरेक्ट गोवा पहुंच गया ना. यहाँ पे तो ही इज एंजॉइंग गोवन बीचेस, ही इज एंजॉइंग टूरिस्टी थिंग्स, ही इज एंजॉइंग ज्वेलरी बैग्स एंड एक्सेट्रा. सो ऐसा ऑप्शन मुझे ढूंढने जाना है, दैट विल बी मोर अप्रोप्रिएट. यही चीज पढ़ के आपको ये कॉन्टेक्स्ट समझ में आना जरूरी है कि एक्चुअल बात हो किस बारे में रही है. ठीक है. नाउ इफ आई एम टू रीड द ऑप्शंस नाउ, देयर आर सम बसेस दैट प्लाई एट नाइट. There are both day and night trains, and one can always hire a car and reach there in comfort in about 10 kilometers. यही तो मैं ढूंढ रहा था. ठीक है, यही मेरा करेक्ट आंसर है, यही ढूंढ रहा था. बट बाकी ऑप्शंस को एग्जाम में नहीं देखने जाऊंगा, बट फॉर द सेक ऑफ एक्सप्लेनिंग एक बार ऑप्शंस भी देख लेते हैं कि बाकी ऑप्शंस क्यों, why they are incorrect. ठीक है, let's have a look. A great getaway place. It offers an interesting variety of food, sightseeing, flea markets and some wonderful Indo-Portuguese building. See, उसको बीचेस पर जाना था, तो बीचेस वाला पार्ट तो यहाँ पे शुरू हुआ. उसके बाद it's all about sightseeing, it's all about partying, it's all about enjoying the local cuisines. Then comes कि भाई हाँ ठीक है, इंडियन और पोर्टुगीज कल्चर का मिक्सचर है. ये सब बातें तो बाद में होंगी ना. सबसे पहले तो उसको बीच पर जाना है. उसकी फैंटेसी, उसका विश यही है कि आई वांट टू गो टू अ बीच डेस्टिनेशन. सो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता. वन ऑफ द ग्रेट थिंग्स अबाउट अ हॉलीडे इन गोवा इज दैट वी कैन बी एज लेजी एज वी वांट. अगेन ये बातें बाद में आएंगी. सम मेजर बीचेस, अब कैन यू इमेजिन कि सम मेजर बीचेस वाली बात हो रही है एंड देन दे आर टॉकिंग अबाउट द मेजर गोवन बीचेस. सो ये तो टोटली आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, ये तो टोटली आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है. सो यस, यहां तक he wished he could go to Goa. Then he thought
कि ठीक है गोवा जाते हैं, देन ही थॉट अबाउट कनेक्टिविटी कि ठीक है मुंबई से इट इज 600 किलोमीटर्स, एंड देन वी विल टॉक अबाउट वेज ऑन हाउ अ पर्सन कैन रीच फ्रॉम मुंबई टू गोवा. दैट इज व्हाट द मिसिंग पार्ट ऑफ दिस पैराग्राफ वाज, राइट? So I hope बच्चा पार्टी clarity है. That was our question number one. Let's move to the next question, guys. Let's move to the next question. क्या वो मिसिंग पार्ट है जो हम आइडेंटिफाई करेंगे यहाँ पे? कौन कौन से वो मेरे क्लूज हैं, कौन कौन से वो मेरे ग्रामेटिकल जो टिडबिट्स हैं जो यहाँ पर यूज होने वाले हैं, उन सारी बातों पर वी कैन हैव अ डिस्कशन. सो आई जस्ट मूव आउट ऑफ द फ्रेम. एक बार आप लोग देख लेते हैं. So nowadays, many teenagers and young adults around the world have to spend most of their time studying in order to get top grades, a university place, and a good job. ठीक है. There are several causes for this situation. It means missing part में there is some situation जिसके बारे में discussion हुआ है. There has to be some situation. वरना ये बात लिखी क्यों होती? There are causes for some situation. Now, what situation are we talking about? इसके बारे में बात कर लेते हैं. So, one of the main ones being exams. These are stressful experiences. I know a lot of you can relate to this. कि हाँ sir, exams, yes, they are stressful experiences, and most students take a huge number of them during their school career. So, ठीक है. पहली बात ये कह रहे हैं कि young teachers around the world are spending a lot of time in studying. That is leading to a particular situation. And the reasons for that situation are mentioned in the latter half of this paragraph. So there is something जिसका एग्जाम से लेना देना नहीं होगा. नहीं होगा. क्योंकि अगर वो सिचुएशन होती तो फिर तो ये सिमिलर ही कॉन्टेक्स्ट चल रहा होता ना पूरा. फिर से सुनना एक बार. Therefore, studying while you are exhausted is unproductive. Is there any mention of exhaustion? Is there any mention of being unproductive? कहीं भी ऊपर नीचे वाले पार्ट से, फॉर्मर लैटर पार्ट से, there is no context, there is no connection. Therefore, it would be better for them. नहीं. For this reason, now for this reason, what is happening? हमें उस पर फोकस करना है. So nowadays, many teenagers and young adults around the world have to spend most of their time studying in order to get top grades, a university place, and a good job. For this reason, there is often little time left for hobbies or socializing. This is what the missing part was. अब आगे रीड करो. There are several causes to this situation. अगर आप बोलते हो कि सर मुझे लग रहा है D करेक्ट है, so I'll explain why D is not correct. For this reason, the education system has to change. Is it about changing the education system? कुछ ऐसा drastic बता दिया भाई कि students are committing suicide and students are not able to handle the stress of examinations. क्या ऐसा कहीं कुछ mention है? नहीं. They are getting stressed because of the examination, but ऐसा नहीं लिखा है कि बिल्कुल education there is a need और there is a बिल्कुल जिसे कहते हैं कि such a grave problem कि जिसकी वजह से education system को ही change करना पड़े. ऐसा कहीं कोई mention नहीं है. ठीक है ना? So for this reason, the education system has to change for the welfare. Nahi. For this reason, there is often little time left for hobbies or socializing. That is what the missing part in this paragraph was. So I hope students अब clarity है और confusion has gone out of the window. Let's now move to the third question, students. Again, a question from IPMAT 2022. So इसमें starting का part ही missing है. जब किसी भी सेंटेंस में स्टार्टिंग का पार्ट मिसिंग हो, सो इट बिकम्स अ बिट मच इजियर, क्योंकि मुझे पता होता है कि यार कुछ तो इंट्रोडक्टरी पार्ट होगा जिसको लेकर उसी थीम पर आगे डिस्कशन चल रहा है. ठीक है. सो आई रीड इट, फिर we'll go through the options कि भाई क्या करेक्ट हो सकता है. What am I looking for here? ठीक है, इस पर बात करते हैं. So in Southeast Asia, for example, climate and lifestyle factors mean that people spend much more time in shopping malls than Europeans do, who might go shopping once a fortnight. So we are talking about this relative pronoun who is used for Europeans. So what they are saying कि climate and lifestyle plays a very crucial role in deciding कि भाई कौन कितना shopping जा रहा है. So that is what they are saying कि भाई Southeast Asia में people are going a lot of shopping,
And as far as the Europeans are concerned, they are just going for shopping once in 14 days, once in a fortnight. ये एक फैक्टर था. Now what the other factor is? Then there are gender variations in the way we shop. As descendants of hunter-gatherers, accumulating is in our blood. But how you go about it depends on whether you are male or female. So accumulation कि भाई hunter gatherers थे ही हम, humans पहले hunter gatherers ही थे, and we are descendants of them. So we have this habit of accumulating things, but that also depends. Male का accumulation का purpose कुछ अलग होता है, female का accumulation का purpose कुछ अलग होता है. क्या बात समझ में आ रही है? शॉपिंग कैसे डिसाइड हो रही है? मतलब व्हाट आर द मेजर फैक्टर्स? क्या एक्यूमुलेशन ही सब कुछ है, या क्लाइमेट ही सब कुछ है, या ज्योग्राफिकल लोकेशन ही सब कुछ है? इस पर, इसके अराउंड मुझे यही क्लूज मिले और इसके अराउंड ही मैं अपना आंसर ढूंढने जाऊंगा. समझना. अब अगर इफ आई गो थ्रू दिस ऑप्शन नंबर 1, by and large people enjoy shopping comparing brands and prices. Absolutely not, as far as the context of this paragraph is concerned, क्योंकि ऐसा कहीं पर नहीं लिखा है that it's about brands, it's about prices. There is no such mention. Similarly, retail stores constantly offer promotional discount to entice shoppers. That is again totally out of context of what is written in the paragraph. When it comes to shopping, men hunt and women gather. No, यहाँ पे बात लिखी हुई थी. यहाँ पे बात क्या लिखी हुई थी कि we are gatherers, and how we gather, how we accumulate, that also varies from male to female. ठीक है, ये बात लिखी हुई थी. तो ये ऑप्शन तीनों ही आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट दिख रहे हैं. व्हाट इज इन कॉन्टेक्स्ट? दैट कल्चर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन शेपिंग द शॉपिंग एक्सपीरियंस. यस, इट्स द कल्चर दैट डज दैट. कहां से समझ में आएगा मुझे? क्लाइमेट और लाइफस्टाइल जैसे वर्ड्स लिखे हुए ना, सो दे आर रिलेटेड टू कल्चर. ठीक है. सो इस क्वेश्चन में वी कैन यूज एनीथिंग. मतलब आइदर वी कैन नेगेट द 3 ऑप्शंस व्हिच आर इनकरेक्ट, और वी कैन चूज कि भाई हाँ करेक्ट कौन सा. वो भी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑप्शन मुझे दिख रहा था. इस क्वेश्चन में ऐसे अब ही नहीं था कि भाई देयर वर 2 क्वेश्चंस जिसमें आप देयर वर 2 ऑप्शंस जिसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे. सो ऐसा कुछ भी नहीं था यहाँ पे. ठीक है. सो दैट वाज योर क्वेश्चन नंबर 3. लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन फ्रॉम IPMAT 2022. आपने ये क्वेश्चन शायद देखे होंगे. आपको लगता होगा कि ठीक है सर मैंने पढ़ लिए, मैंने आंसर्स पढ़ लिए, बट नो. आंसर जान लेना किसी भी क्वेश्चन का, दैट शुड नॉट बी योर सोल ऑब्जेक्टिव. यू हैव टू मेक श्योर कि आप उसको इतना ज्यादा सेग्रीगेट कर दो कि कुछ बचते ही ना उसमें. मतलब अब यहां से क्या ही और पूछ लेगा एग्जामिनर, ऐसा क्या पूछ लेगा जो हमारे स्टूडेंट्स को नहीं बनेगा. ठीक है ना. बस इस पर आप थोड़ा सा फोकस कर लोगे तो फिर देयर इज नथिंग लेफ्ट टू डू. द पीपल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन wrote with a script. ठीक है, they had a script. Now, so far, scholars have been unable to decipher that script. They have been unable to decode that script. Archaeologists who have been excavating newly discovered sites in Mesopotamia hope to find a text that has scripts from both the Indus Valley and Mesopotamia. The second of which has already been deciphered. Now the second has been deciphered. So what will happen? What will happen? भाई स्क्रिप्ट से हमें समझ में आ जाएगा कि देन दे विल बी एबल टू डिकोड द इंडस वैली लैंग्वेज, ऑब्वियसली. क्योंकि स्क्रिप्ट क्या है? स्क्रिप्ट इज समथिंग व्हिच इज रिटन. तो लैंग्वेज का ही तो खेल है, लैंग्वेज की ही तो बात हो रही है. ये क्यों ये एक्सकेवेशंस चल रहे हैं? ये क्यों आर्कियोलॉजिस्ट इतना परेशान हो रहे हैं? फॉर दिस सिंपल रीजन कि लैंग्वेज को समझ पाए. ठीक है. अगर मैं दूसरा ऑप्शन देखने जाऊं, सो दे विल बी एबल टू डिसाइड हाउ इज language responsible in deciding कि which civilization is older. ऐसा कहीं भी पैराग्राफ में कॉन्टेक्स्ट में नहीं है. Similarly, the nature of relationship between the two, they are not discussing the relationship between Indus Valley and Mesopotamia. They are only doing that just to make sure कि उन्हें लैंग्वेज का आइडिया लग जाए. They are not discussing trade between Mesopotamia and Indus Valley civilization. Simple. Then they can prove that there was trade. Exactly जो trade वाली बात यहाँ लिखी है, that is again totally out of context, right? So that was your question number 4, students. Let's move to the next question that is from IPMAT 2021. IPMAT 2021. So I'll move out of the frame. आप लोग एक बार नजर मार लो. सिर्फ नजर ही मारने का टाइम दूंगा, ज्यादा टाइम नहीं दे पाऊंगा. So चलिए बता दीजिए भाई क्या आपको लगता है. Which of the following could be the correct
करेक्ट पार्ट जो इस पैराग्राफ को कंप्लीट करेगा. So postponed from last year, the Tokyo Olympics are set to begin this year. The locals are wary, they are cautious. The athletes are anxious. Training sessions are truncated. Training sessions are truncated मतलब कि training sessions पहले अगर 1 hour 2 hour sessions होते थे, so now they are truncated, now they are curtailed to 30-minute or 40-minute sessions. And restrictions are extensive. Yet Japan in many ways is seen as a safe choice because of its past experience of hosting big events. It has an impeccable is flawless reputation for discipline and the ability to deliver the goods. Now, what is happening कि एक situation को मैंने यहाँ पे express किया कि भाई टोक्यो ओलंपिक्स लास्ट ईयर से पोस्टपोन्ड हो गए थे. एथलीट्स आर इन टोक्यो और पीपल आर एंशियस. The officials are very cautious. Training sessions are truncated. उसके बाद भी what they're trying to say is कि yes, Japan is a safe choice. So problem क्या है यहाँ पे? Problem वाला जो part है वही missing है कि ये बातें हो क्यों रही हैं? Why this paragraph is written? Simple. तो अगर मैं यहाँ पे ढूंढने जाऊं, ठीक है, The Japanese are anxious but ready to welcome the athletes. भाई athletes तो वहां पे पहुंच चुके हैं already. So again, this is not the correct answer. The shadow of the pandemic looms large over the Tokyo Olympics. That is what it is expressing. Yes, the shadow of the pandemic का danger is still, it is still looming around Japan. तभी तो ये बातें हो रही हैं that people are very cautious, officials are very, they are also very cautious कि भाई कुछ problem ना हो. एथलीट्स के जो ट्रेनिंग सेशन है दे आर curtailed, दे आर truncated. So ये क्यों हो रहा है? Because of the pandemic's danger. The International Olympic Committee has fully supported. That is again totally out of context. ये situation चल क्यों रही है? For this sole reason. Japan is going through economic recessions. How can economic recessions be the part that completes this paragraph? So again, इकोनॉमिक रिसेशन का कोई बात यहाँ पे कोई मेंशन नहीं है. It is all about that the shadow of pandemic looms large over the Tokyo Olympics. Right? Let's move to the next questions, which is from IPMAT 2023. A more recent paper और IPMAT 2023 के questions देखते से ही you guys are like कि sir, we will pounce on these questions. ये questions तो हमें ऐसे लग रहे हैं कि बार बार पता नहीं कितने बार हम ये previous year questions कर चुके हैं. So let's discuss this question, students, which is from IPMAT 2023. ठीक है, first part is missing, तो इससे कोई problem नहीं है. Conflicts are now brewing over rivers and river basins shared by many countries around the world. This is not unexpected. Why is this not unexpected? क्योंकि शायद ये बात पहले कहीं पर डिस्कस हुई होगी. पहले कहीं पर मतलब in the missing part. ठीक है. Given the fact that more than 200 water bodies are shared by 2 or more countries, strife is again a fight, a tussle over water, for example, is erupting throughout the Middle East, from the watersheds of the Nile to the Tigris and Euphrates rivers. So they are giving multiple examples कि अब ये वाटर रिलेटेड जो प्रॉब्लम है ये भी स्टार्ट हो चुकी है. और ये वाटर रिलेटेड जो प्रॉब्लम है इट कैन टेक अ वेरी ग्रेव फेस, इट कैन टेक अ वेरी ग्रेव टर्न. दैट इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू से. सो मैं पहले जो गलत ऑप्शंस हैं उनको एलिमिनेट करता हूं, ये समझते हैं जरा. सो द वर्ल्ड डज नॉट कंसिडर वाटर टू बी स्कार्स. अगर ऐसा होता सो ये बात नहीं लिखी होती दैट देयर आर कांस्टेंट टसल बिटवीन कंट्रीज. नंबर वन. Fresh water, we are not talking about fresh water, saline water, alkaline water, or any other type of water that Virat Kohli drinks. नहीं, हम ये बात नहीं कर रहे हैं. We are just talking about water and its resources, water bodies. सिर्फ इसके बारे में discussion हो रहा है. So this is again out of context. It might be a cliche, but given how scarce it is, water is the new oil in the 21st century. Are we talking about 21st century? Is there any mention of oil in this case?
सो ये दो ऑप्शन जरूर ऐसे ऑप्शन थे कि एज अ स्टूडेंट आई कैन एक्सपेक्ट कि आप इन दोनों में कंफ्यूज हो सकते थे, बट सी और डी आर टोटली आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट. नाउ इफ आई रीड द फर्स्ट वन and then I'll tell you ki how it makes a lot of sense to use this one in completing this paragraph. So, with water becoming increasingly scarce and development of new sources of water extremely costly, international water tensions are expected to rise. Yes, पहले सेंटेंस में दे आर सेइंग दैट यस इट इज एक्सपेक्टेड कि इंटरनेशनल वाटर टेंशंस आगे चल के बढ़ जाएंगी. सेकंड पैराग्राफ में सेकंड सेंटेंस में व्हाट दे आर सेइंग कि यस इट इज हैपनिंग, कॉन्फ्लिक्ट्स आर नाउ ब्रूइंग ओवर वाटर. और लास्ट में दे हैव कंक्लूडेड कि भाई इट्स नॉट जस्ट हैपनिंग, दे आर आल्सो गिविंग दैट फिक्स्ड एग्जांपल कि ये हो भी कहां रहा है. सो दैट इज व्हाई योर ऑप्शन ए is the correct part which will complete this paragraph. So I hope students clarity hai. I know clarity hai. I can say that with conviction. And if you can also say that with conviction कि हाँ sir मजा आ रहा है. So बच्चा पार्टी session को like जरूर कर देना. And if you guys are enjoying the session, do share it with your friends, families, enemies and everyone. ठीक है? Let's come to the next question, which is again from IPMAT 2023. This para completion is about urban planning. So what this paragraph is all about, I'll read it, I'll read through it, and then we can answer the questions that follow. So in the late 1960s, architect Charles Correa began his career as an urban planner, creating New Bombay, which is now Navi Mumbai, an urban area that provided housing and job opportunities for many who lived across the harbor from the original city. Across is that is from one side to the other side, theek hai? In the midst of overpopulated cities, he tried to create quasi-rural housing environments. Quasi is what is quasi? Matlab not exactly, but halka halka. Matlab you can say partially rural housing environments. In all of his urban planning commissions, Corey avoided high-rise housing solutions. So he never used high-rise housing solution. He was trying to make partially rural housing environments. These are the two most important clues that I get from reading this. अब इस पैराग्राफ को कंप्लीट कैसे करना है इस पर जरा फोकस करते हैं. His early work combined the traditional architecture with the modernist use of materials. कैसे? Are we talking about his early work? Are we talking about his early work? No. He is particularly noted for his sensitivity to the needs of urban people. Urban people के लिए he has made a lot of infrastructure. ऐसा पैराग्राफ में कहाँ लिखा है? कहीं नहीं लिखा है. So he is not at all concerned with the needs of urban people. Ab, third question. He focused on low-rise dwelling solutions that emphasize the human scale and created a sense of community. Yes, environment लिखा हुआ है, community लिखा हुआ है. He avoided high-rise. If he avoided high-rise, that itself means कि भाई वो low-rise apartments बना रहा था. यहाँ से ये context समझ में आ रहा है. Considerations of the Indian climate drove many of his decisions. There is no such mention of the climate कि भाई मुंबई में सुनामी आ गया, so that is what was impacting the way he was trying to design that Navi Mumbai area. There is no mention of the climate. So as far as this question goes, the correct answer is option C. ठीक है? That brings us to the next question, students. Again from IPMAT 2023, one of the recent papers. And if I am to say कि भाई trickiest question, they are tricky if you are just looking for the answers. आप कहीं भी जाते हो, आप ये देखते हो कि ये क्वेश्चन था, इसका आंसर ये था, एक्सप्लेनेशन पढ़ लिया, हो गया. नहीं, एक्सप्लेनेशन भी आपको क्वेश्चन करना है कि भाई वो उतना ऑथेंटिक है या नहीं है. नहीं है, सो राइट इट डाउन इन द कमेंट बॉक्स कि सर मजा नहीं आया, समझ में नहीं आया, आई विल हेल्प यू आउट विद थिंग्स, डोंट वरी. ठीक है? सो अब अगर इस क्वेश्चन की बात करते हैं स्टूडेंट्स, सो दिस गोज लाइक दिस. The concept of villa and other European ideas came to Lucknow with foreign soldiers, travelers and adventurers. ठीक है? So what is villa और ये जो European styles था
बिल्ड करने का, इट केम टू लखनऊ along with travelers and soldiers. For the Nawabs of Lucknow, architecture became the physical manifestation of their new status and a way of proclaiming their alignment with the new power block. मतलब जो लखनऊ के नवाब्स थे उनके लिए भी it became imperative कि यार उनके जो भाई जहां पे जो रहने की जगह है उनके भी जो पैलेसेस हैं, now they are no longer palaces, they should become like villas. जैसे यहाँ पे बताया है कि भाई यूरोपियन सोल्जर्स आ रहे थे, सो नवाब ऑफ लखनऊ को भी अपना अब उसी तरीके से चीजें डिजाइन करना था. Villas hence provided an ideal substitute. Matlab, they are providing an ideal substitute, students. This part of this paragraph is very important. सारी information मुझे यहीं से मिलेगी. ठीक है? Europe sold to the Nawabs the ideas of villas based on designs and publications carried by them and often aided by memory. The building chosen as the prototype for the famous Dilkush Koti was a country house in Northumberland. Northumberland, ठीक है. So there was something, these villas were providing a substitute to something. So originally क्या exist कर रहा था वो मुझे ढूंढना होगा किसी ऑप्शन में, and that will work wonders for me. कैसे देखते हैं. The villa became the backdrop of both private as well as the court life of the Nawabs. No, that is absolutely incorrect. The Nawabs chose to live in villas because they were easy to construct than palaces. Yes. Now we are talking about a substitute. ना? Now we are talking about a substitute. कि विला बनाना उनके लिए पैलेस बनाने से easy था. So it provided an ideal substitute. As I said कि इस लाइन से इससे मुझे सारे clues develop होंगे यहाँ पे. ठीक है. फिर the Nawabs were attracted to European ideas because of their foreignness. It was not about foreignness. It provided ideal substitute. तो बहुत ही pragmatic option रहा होगा, बहुत ही viable option रहा होगा. That is the reason they chose कि ठीक है भाई पैलेस बनाने से अच्छा we should start living in villas. The Nawabs of Lucknow fancied building palaces that resembled British ancestral homes. No, it is not. A Britishers का mention कहीं पर नहीं है. Europeans का mention है, Britishers का mention नहीं है. So for that reason, the correct answer for this question is option B. And students, that brings us to the last question of today's session. Here we go. A study of social and cultural context of Indian poetry in English reveals several important insights into its origin. Indian poetry in English began in Bengal, the province where the British first gained a strong hold. In addition, this poetry was largely urban phenomena centered in Calcutta. So ये urban phenomena is, I think, something जो बहुत ज्यादा हमारे काम आने वाला है when we are going to answer this question. समझना बात को. Then gradually it moved to other urban centers like, मतलब क्या है कि what they are trying to say is कि कुछ time के लिए, see, something happened, then this happened. So ये जो something happened वाला part है, it must have happened for some time, कुछ time तो होगा. So that is what I think that is what the completion वाला part will be कि भाई कुछ time के लिए it was centered around Calcutta and then it flourished, then it moved out of Calcutta जैसे लिखा हुआ है, it moved out to urban centers such as Madras and Bombay. Even today, Indian poetry in English remains largely urban. So it is again till date it is largely urban. Moreover, because English was an elite language, Indian poets writing in English came from the upper classes. ठीक है, किसी भी आपने गरीब इंडियन को इंग्लिश में पोएम्स लिखते हुए शायद ही हिस्ट्री में सुना हुआ हो, तो ये इसी कॉन्टेक्स्ट में सारी बात चल रही है. The rurals encouraged the native to write poetry about India only if their mother tongue was English. No, it is not about mother tongue. They are trying to say कि इंग्लिश में पोएट्री वही लोग लिखते थे who came from upper classes. So upper class से काफी क्लू मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे. English was seen as an elite language, so the British felt that only they could use it for poetry. नहीं, ये तो totally out of context है, because the paragraph is about कि Indian writers कौन थे जो English में poetry लिख रहे थे. The British had decided that the poetry about India could reach a larger audience if written in Calcutta. ऐसा भी कहीं नहीं लिखा है, क्योंकि they are saying कि ठीक है, it moved, it prospered, it flourished,
but it was primarily written by upper classes. Now, when I come to option D, I'll stop here. क्योंकि जो जो क्लूज मुझे पैराग्राफ में मिल रहे थे वो सारी बातें यहां पे रिलेट हो रही हैं, समझना. इनफैक्ट पोइट्री राइटिंग फॉर द फर्स्ट 50 years, एज आई सेड, कुछ टाइम तो होना चाहिए ना, कुछ टाइम तो होना चाहिए. देन समथिंग एल्स हैपेंड. तो ये देन जो यहाँ पे आपको कनेक्टर दिख रहा है ना, इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. सो इनफैक्ट पोइट्री राइटिंग फॉर द फर्स्ट 50 year was confined, was restricted to a few families who were residents of Calcutta. Who were these few families? These families were from upper class. It is as simple as that. Right? So I hope clarity है. I hope पैरा कंप्लीशन में अब मेरे स्टूडेंट्स को आईपी मैट 2024 में कोई भी चीज ट्रबल नहीं करने वाली है. और बच्चा पार्टी, क्या आप लोग नहीं चाहते कि आपकी भी फोटोज इस तरह से यहाँ पर दिखें, आपके नाम के भी आगे लगे AIR123? सो अगर आप ऐसा चाहते हो, सो व्हाट आर यू गाइस वेटिंग फॉर? चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर लो. वीडियो में मजा आया तो लाइक जरूर कर देना स्टूडेंट्स, और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलना है. टिल देन मैं आपको अब मिलता हूं बच्चा पार्टी नेक्स्ट क्लास में विथ पैरा जंबल्स. तब तक के लिए गुड नाइट, गुड इवनिंग, थैंक यू सो मच.